वेलकम टू स्ट्रीम गाइस। कंटिन्यू करते हैं अभी हॉगवर्ट्स लेगेसी हैरी पॉटर का जो नया गेम आया है 2023 में रिलीज़ हुआ है अभी उसको खेलेंगे। फेब में ही रिलीज़ हुआ लगता है ना, ये बहुत नया गेम है यार। इतना डार्क क्यों हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, स्टार्ट हो जा भाई, चल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है ना गाइस, मतलब जैसे हम लोग का एक कैरेक्टर बन गया और हम लोग डायरेक्ट जो है 5th सेम में जा रहे हैं। हम जैसे हैरी पॉटर कहता है वैसे स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर में नहीं घुसते, हम बीच में जा रहे हैं। उसका रीज़न मुझे मालूम नहीं। फिर वहाँ पे एक प्रोफेसर फिक करके होता है और वो प्रोफेसर फिक जो है वो हमको ले जाता है। जैसे हैग्रिड हैरी पॉटर को ले जाता है ना हॉगवर्ट्स में, वैसे ही हमको एक प्रोफेसर फिक करके बंदा होता है, वो ले जाता है। उसके साथ एक और बंदा होता है। लेकिन जब वो हम लोग जा रहे होते हैं ना, वो ट्रेन में नहीं जाते, हम लोग ना वो कैरेज में जाते हैं। तो जब वो कैरेज में जा रहे होते हैं तब वो कैरेज पर जो है एक ड्रैगन अटैक करता है और ड्रैगन अटैक करके जो है हम लोग को इंजर्ड कर लेता है और फिर हम लोग वहाँ कहीं पे गिर जाते हैं। फिर पोर्ट की नाम का कुछ मिल जाता है हमको और पोर्ट की भाई ये क्या है? नाइस। ये पोर्ट की यूज़ करके ना हम लोग कहीं पे पहुंच जाते हैं एक जगह पे और बाद में इसको एक्सप्लोर कर करके हम लोग पहुंच जाते हैं। वो क्या है उसका, गॉडरिच गॉडरिच जो है, मतलब वो बैंक होता है ना जहाँ पे कौन सा फिलोसोफर स्टोन वगैरह रखा जाता है ना, वो वाला स्टोन वगैरह जिस बैंक में रखते हैं। कॉब्लिन्स का जो बैंक है हैरी पॉटर की मूवी में, उस बैंक के अंदर हम पहुंचते हैं और फिर हम लोग 12 नंबर का वॉल्ट में जाते हैं और वहीं पर कुछ मिलता है चीज़ें जो लेके हम लोग को वापस आना होता है। फिर हम लोग जो है ये हैरी पॉटर, ये अपना कैरेक्टर है गाइस, इस कैरेक्टर को लेकर हम लोग में जाते हैं और हमको जो सॉर्टिंग हैट होता है उसके थ्रू हम लोग, देखो ये हम लोगों ने ग्रिफिंडोर ले लिया। अपना हैरी पॉटर का जो हाउस था वही हाउस ले लिया हमने। अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं, चलो लेट्स कंटिन्यू। भाई साहब ये कैसा स्केलेटन वेलेटन दिखा रहे हैं? ये वो जगह है ना जहाँ हारमाइनी ने उसको मारा था, पंच मारा था वो साले को। कौन था यार वो? चलो हम लोग बन गए हैं ग्रिफिंडोर हाउस। ओके गाइस चलो अभी देखते हैं। रुको, एक और चीज़ बाकी रह गया। अपना जो MSI आफ्टर बन है उसको भी ऑन कर लेते ताकि जो है अपना कुछ ग्राफिक्स वगैरह, ग्राफिक कार्ड या फिर CPU ओवर एग्जॉस्ट हो रहा है तो मालूम पड़ जाएगा ना हमको क्या परफॉर्मेंस रहती है उसकी, वो भी मालूम पड़ेगा। देखो अभी 3080 Ti कम यूज़ हो रहा है, 13700 पे थोड़ा लोड आ रहा है क्योंकि हम लोग जो है वो कम कर दिया ना, क्या बोलते हैं उसको यार, ग्राफिक कार्ड से CPU पे ले गए हम लोग। स्ट्रीम जो चल रहा है ना अभी ये CPU के ऊपर स्ट्रीम चल रहा है क्योंकि अपना CPU भी एक नंबर है ना भाई, हम लोग क्यों ये करें फिर, इसलिए मैंने ओके ओके। चलो अभी अल्ट्रा पे करके देखते हैं। अप्लाई सेटिंग्स अभी एकदम गैस फोड़ू, मतलब इससे ऊपर और कोई क्वालिटी है नहीं। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी सेटिंग्स पे गेम खेलेंगे। ओके ये अपना ग्रिफिंडोर हाउस है, देखो गाइस कैसे होता है हाउस अपना। तो ये अपने जो वहाँ वो लोग रहते थे ना, उनका भी बेड ऐसा ही होता था। हैरी पॉटर और उसका जो फ्रेंड था रॉन। तो एक घर के अंदर एक हाउस में भी चार लोग रहते हैं। उनके ये देखो, उनके ये ओपन कर सकते हैं क्या? नहीं ओपन कर सकते। फाइंड योर कॉमन रूम, अच्छा कॉमन रूम ओपन करना जाना है। वही अपने पिंजड़े को मत तोड़, उसमें अपना आउल रहता है ना, आउल लेना है हमको, लेना है। चलो कैसे जाना है बाहर यार? हाउ टू ओपन द डोर? Revelio. ये देखो ये रहा घर उसका। अब इसको खोलना पड़ेगा हमको ना, खोलने का ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं है, सीधा खोल जाता है।
ये घर के जो स्टेयरकेसेस हैं वो तो यूजुअली मूव करते हैं, हमारा ये क्यों नहीं मूव हो रहा है? फिर ऊपर जाना है क्या या नीचे जाना है? नीचे जाके देखते हैं। ऊपर दिखा रहा है ये जगह तो। ये किसका घर है? वापस कहीं पे पहुंच गए हम, किसी और के घर में पहुंच गए। ऊपर जाके देखते हैं कि इस साइड में तो जगह दिख नहीं रहा है कुछ। Now, which way is the common room? देखो भाई नीचे है यार, कॉमन रूम नीचे है। ये कौन है? प्रोफेसर फिग है ना ये? लेवल लॉक। अच्छा, मतलब हम लोग को अपना लेवल अप करना पड़ेगा। Must be different starting Hogwarts in your 5th year. अच्छा, हमारी बातें कर रहे हैं। Must be difficult. So lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Introduce yourself to Cassandra, Don't Gareth fall off and this Nelly. time, Nelly. Stay. कहाँ है बे गैरेथ, नेली? वहाँ पे है To क्या? be honest, I would really like someone to try. Sure you don't want to try it? गैरेथ विज़ली। Brewed it myself. रॉन की जगह पे गैरेथ है अपना दोस्त यहाँ पे। Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. अच्छा, विज़ली का बच्चा। That must be nice. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Nice meeting you. What's that in a mug? Do you next potions too? Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. चलो, ये है अपना रॉन। अभी लड़की वो हरमाइनी कौन है अपनी? ये कौन है? क्रेसेंडा नेली। she gets boring every Anything year. for attention. Still not working. Ugh. ये कौन है? क्रेसेंडा ब्लूम। और नेली कहाँ है? I wish they'd let Reverend Peach do चलो बात करते हैं इसी से। I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. ये हरमाइनी जैसी ही Why है। is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little yeah. before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep रोनन at कौन है? it. स्नेप। Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. चलो, अभी कौन है? नेली। हाउस चेस्ट क्या है? अलाउड नहीं कर रहे कुछ करने के लिए। वो देखो नेली। Nelly will do anything I for want to attention. hear your ऊपर first बैठे। wings, Nelly. I'm sure you'd use them. ये कौन है यहाँ पे? अच्छा, ये नेली है। Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower. From the outside,
without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Nice to meet you. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. वापस ऊपर चढ़ गई. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. प्रोफेसर विजली मतलब वो हाँ ये गैरेथ की माँ ना. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you ये कौन are. सा बुक है? H for Harry Potter. ये बुक में सारा ही नॉलेज है क्या? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Revelio. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. I know they did. Simply ये cast क्या हुआ? Revelio on it, and we'll see what the guide says. I think they're drawn to it. Also, my Field parents guide told me page. lots of Hogsmeade, but I don't. This portrait depicts a wizard Barufio, famed for his brain elixir, as an example of what happens when incantation are broken. He once said, instead of F, and found himself on floor with a buffalo on his chest. फील्ड गाइड चैलेंज. अच्छा, फील्ड गाइड चैलेंज अनलॉक हो गया. फिर फील्ड गाइड से ओनली वे टू एक्सप्रेस पर. ठीक है, ओपन फील्ड गाइड. अच्छा,
Your field guide tracks your current challenge progress. Select challenges menu to continue. ठीक है, ओके। ये वाला जो खुला है उसको ले लेते हैं। एंटर, ओके। इस रिवर्स में क्लेम फ्रॉम, अच्छा ठीक है। रेवन क्लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्या है बे रेवन क्लॉ? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and Revelio. outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. कहाँ लेकर जा रही है ये हमको? फॉलो प्रोफेसर विजली। भाई क्या ही घर बनाया है यार, एकदम Good प्रॉपर timing. हॉगवर्ट्स बनाया है। Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ओके, मैप है। अच्छा ये देखो हॉगवर्ट्स का मैप आ गया पूरा। फ्लू फ्लेम्स लोकेशंस, ठीक है। फिर ये रहा सेलर साउथ विंग टू कंटिन्यू, साउथ विंग, ठीक है। फिर साउथ विंग के अंदर हमको जाना है। फ्लेम्स यू हैव डिस्कवर्ड, अच्छा ओके ठीक है। राइट साइड ऑफ द मैप इज वेयर यू फाइंड एकेडमिक पॉइंट्स, ठीक है ओके। नेक्स्ट रीजन टू कंटिन्यू, सेलेक्ट लाइब्रेरी नेक्स्ट रीजन। यूज ए एंड डी टू, ओके ठीक है। हमको भी जाना कहाँ है फिर? वो ग्रीन वाले पे क्लिक किया तो पहुंचा देगा लगता है फ्लू फ्लेम्स डायरेक्टली उधर, इधर से उधर। मैजिकल इसमें And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay, Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Okay, thank you. Can you tell me what Charms What will class? I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Sure. Ronan. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, Fight focuses on करने के how लिए ना? to defend oneself अच्छा, against defend. the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Alright. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What is Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies अच्छा, you वो require Hogsmeade, in वो जगह। Hogsmeade. You will Wand, also, wand, I सब कुछ imagine, मिलता है। enjoy many a butterbeer there with friends in due course. ठीक है, thank you Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.
We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. मेन क्वेस्ट अच्छा ठीक है कुछ लॉक ओके ठीक है ये वाले जाना है डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट चार्म्स डिफेंस जाते हैं लेवियोसो सीखने The map is enchanted to help you find your way. उड़ने वाला है ना This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ठीक है चलो जाते हैं अभी वेलकम टू हॉगवर्ट्स खत्म हो गया कोर्स अच्छा I don't like flying on a broom. I prefer the safety of a ये देखो हॉगवर्ट्स वे तुम लोगों को मैं मारूं क्या हट और क्या हो रहा है इवन फाउंटेन अच्छा सब जगह पे जाकर रिवेले मारेंगे ना कुछ रिवील हो ही जाएगा ये देखो यहाँ पे भी कुछ है ये क्या चीज़ है अच्छा अंदर रह गई उठा लेते ना जाके फिर
खड़ा बे, हम लोग को उठाना है वो चीज़। बंद करके रखा है किसी ने, हाँ? कुछ समझा नहीं मैं, क्या करना है यहाँ। बाद में करूँगा कभी, अभी हम जाते हैं। चलो डार्क आर्ट्स क्लास के अंदर जाते हैं, भाग के एकदम। इतना तेज तो हैरी पॉटर भी नहीं जाता होगा, हम लोग जाते। देखो क्लास के अंदर कितनी तेज है। ओए ये क्या उड़ रहा है, इसको देखो। क्या हंस रहा है बे पागल जैसे, हट। वो क्या चीज़ है, वो देखो लिख रहा है यहाँ पे कुछ। Revelio. पेंटिंग ऑफ इलियस। Lawful when they ask you a question now, isn't it? चलो ऊपर जाते हैं, क्लास ऊपर की तरफ है। यहाँ पे भी कुछ है क्या, रिवील करने वाला? और भी ऊपर, अच्छा यहाँ पे, ये देखो, यहाँ जाना है ना हमको। Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. अच्छा इसने इन्वेंट किया, कौन है ये? इग्नेशिया। इसने फ्लू पाउडर इन्वेंट किया। वो कौन, क्या डांस कर रहे हैं, देख कर आ जाते हैं। हटो बे, हेलो, बीच में रुकते हो। ये भूत है ना वो। हेलो भूत। Revelio. तो चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं भाई, चलो। बहुत प्यास लग गई, चाय पी ली। अभी हम जाते हैं क्लास में। डिफेंस सेकंड, डार्क आर्ट्स। Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. चलो उड़ाते हैं किसी चीज को भी। हो गया लेवियोसो चाम। अभी हम लेवियोसो कर पाएंगे। Levioso. देखो ऐसे उड़ाते हैं। हैरी पॉटर से भी नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, सिर्फ हरमाइनी ग्रेंजर कर पाती थी। हमने Now, उठा दिया। let's try something a little larger. एल दबाना पड़ेगा क्या? Let us begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Levioso! So, now, the bait. Well done. अच्छा कास्ट है लेवियोसो. Very good, but the best way to practice is by dueling. अच्छा We'll इसको start मारना with पड़ेगा you मुझे. two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Lucky? मर गया वे साले. First duel. Let's just say I'm a quick learner. I'm all my students for this adept. I do enjoy live duel. पेल दिया साले को यार. Not bad for a beginner. You give as good as you get. क्या हो गया? मर गया क्या वो? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll... Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, dueling fight. You're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Revelio. यहाँ कुछ हिडन चीज है क्या? नहीं है. चलो ऊपर जाने लगता है ना. अभी ऊपर जाते हैं. How nice to see you, my young friend. ये कहाँ ले? अच्छा इस साइड से जाना है हमको.
visitor as condescending and ill-tempered as he is. तू किससे बात कर रहा है बे पागल भूत से Revelio. यहाँ कुछ हिडन चीज नहीं है ना देखते हैं ये क्या है ये क्या चीज अच्छा फ्लू फ्लेम्स अच्छा क्या हुआ बे कौन मार रहा है तेरे को अच्छा भूत को भूत मार रहा है ये क्या है कैट तू किसकी कैट है बीच में घूम रहा है पूरे हॉगवर्ट्स के अंदर एक ही कैट याद आ रही है दो कैट याद आ रही है मेरे को एक मैकेनिकल का कैट और दूसरा कैट वो इसका होता था ना वो जो गार्ड होता था गार्ड का एक कैट होता था वो जाना कहाँ है बे बी ये देखो ऊपर जाने को बोल रहे हैं ना चलो ऊपर जाते हैं ये क्या है यहाँ पे भी कुछ हो रिवेलियो नहीं कुछ नहीं है ओके बहुत ऊपर ले जा रहा है ये देखो ये तीन सर वाला वो हैग्रिड का कुत्ता होता था ना जो गार्ड करता है फिलोसोफर स्टोन को फर्स्ट मूवी के इंस्टॉलमेंट में मतलब सब कुछ उसकी तरह ही बनाया मतलब लेकिन नाम वाम सब कुछ चेंज किया है डिफरेंट स्टोरी लाइन बनाया उन्होंने स्टोरी लाइन का डिफरेंट है बेसिक स्टोरी लाइन Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. एक्यो हाँ वो एक्यो मतलब एक के हाथ से दूसरे हाथ मतलब जो बॉन्ड वो लेते हैं वो हैरी पॉटर उस मेलफॉय के हाथ से भी लेता है देखो ऐसे करके बॉन्ड लेता है ना That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. सीन्स अच्छे किए हैं. It could have been better. लेकिन क्या है ना यार हैरी पॉटर को बनाना है ना तो मतलब थोड़ा तो स्टोरी वोरी चाहिए होगा ना. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? करना क्या है हमें? एक्यो करके बुलाना है बॉल्स को. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, that's it. Don't lose your composure. कैसे करना है? Accio. Splendid. Very good. अरे गिर गया. Happens to the best of us. दो गिर गए नीचे. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. चलो challenge. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ठीक है. Watch this. अच्छा. ओह, प्रो है ये. ठीक है. अभी अपना चांस आएगा. That is how it's done. देखते हैं अपना क्या करते हैं अपन. Accio. हमने भी मार दिया 50. That's it. Let us see this. There we go. अरे गिर गया. अरे यार हार गया. Not to worry. Be sharp. नाट साइड जीत जाएगी. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Quite impressive. वो जीत गई. एक बॉल अपने नीचे गिर गया इसलिए. मतलब पूरा फुल स्कोर Let us लेकर make बैंक this करेंगे तो a कैसे bit होगा? more interesting, shall we? अच्छा. क्या कर रहा है अभी? ब्लॉक करेगा क्या? अच्छा. इनके थ्रू. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. अरे वाह. नाइस. उड़ा दिया इसको. Oh dear me. Accio. अरे गिर गया. मेरा बार बार नीचे गिर जाता है. अरे दोनों का 0 हो गया. Watch this. अरे यार 50 हो जाएगा इसका. Phew. अभी हम मारेंगे. रुको. Everyone is watching, but try not to be. You're doing quite well. रुक जा. अरे गिरना मत. Excellent control there. यस. अभी हम जीत जाएंगे ना. Be sharp. बड़ा है अब बिडू. रोक दे इसको. रोक दे. यस. रोक दिया. अभी हम करते. देखो. That is how it's done. Accio. 50. जीत गए. साले तू हार गई. Well नाटू. played.
नट्टू 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 जीत गए हम, वो हार गई नट्टूई। Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. चलो क्लास Good game चार्म्स back का there. क्लास भी क्या? I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. चल, thank you very much. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uganda? Uganda Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. रोनन से बात करते भी, वो टीचर से बात कर दिया, अभी रोनन से A बात word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. चार्म्स क्लास भी कंप्लीट, अभी कहाँ जाना है? Revelio. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. I know. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Yes. I've been fortunate. Beginner's luck. बहुत My famous हो brother गए William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. अबे क्या हुआ बे? हट। अच्छा ट्रैक करना पड़ेगा किसी चीज़ को ना। ये देखो ये एक टास्क है यहाँ पे। ट्रैक कर दे क्वेस्ट को, अभी एक्सिट, अभी हम जाते हैं। अभी
अभी जाते क्वेस्ट करने के लिए। कहाँ जाना है? नीचे। हम इतना फास्ट भागते हैं ना, बाप रे बाप, उसेन बोल्ट को पीछे कर देंगे हम। भाई साहब कितना ही तेज है। कितने स्टेयर है यार यहाँ पे। ओह माय गॉड। यहाँ पे आना है क्यों? Weasley after class. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. ये Deke है। Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay. कौन से वाले यार? Professor Ronan, हाँ. Professor Ronan mention did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Books वो सब मिलता है ना, वहाँ जाएंगे अभी लगता है. Ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Sure. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. चलो, Weasley after class हो गया. अभी report to Ronan. ये देखो अपना task जा रहा है यहाँ पे. Speak to Professor Ronan. अच्छा, reparo which is you can take a sense. ठीक है, okay. Rebellion. कुछ है क्या Rebellion के अंदर? नहीं है ना, चलो. सीधा जाते हैं Professor Ronan के पास. Hello, Professor. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. हैरी पॉटर को तो आता नहीं था वो रिपेयर हर बार जाके हरमाइनी ग्रेंजर ही करती थी. I'll start on the task right away, Professor. अभी हम अपना चश्मा खुद रिपेयर करेंगे. चलो कलेक्ट.
This is the right area. I wonder where the flying page is. क्या? Flying page? ये ना? ये क्या है? एक्यो लगाना है क्या इसको? एक्यो। ये देखो भाई। अभी हमको क्या बुक मिल गया ना? अभी हमको जाना है कहाँ? इस साइड, ठीक है। अंदर है, ओके। अंदर जाके A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. हो गया? अभी कहाँ? नीचे? ठीक है, नीचे जाते हैं। I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. हो गया। रिपेयर हो गया अपना नंबर 3। That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. एक और कैट देखो यहाँ पे। बहुत सारे कैट्स दिखते हैं यार यहाँ पे। ठीक क्यों नहीं हो रहा ये वाला नहीं होगा, और कोई है। ये देखो, वेलकम टू हॉग्स मीट। चलो जाके देखते हैं। ये दरवाज़ा तो बंद है। अच्छा, यहाँ से जाके देखते हैं। नीचे जाना है लगता है। Everyone seems to fear Professor Sharp. Not me. Hello, looking for me? Netty. Chalo, Netty. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. चलो अभी हॉग्समीड मतलब वो ये नहीं है। ये हॉग्समीड नहीं है। हॉग्समीड तो वो शॉप्स वगैरह है ना, जहाँ पे बुक्स, वॉन्ड, आउल वो सब मिलता है। अच्छा हम जा रहे हैं। अच्छा ये I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. ये वो देखो क्विडिच का जो मैदान है I had उनका। planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a better Reparo. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Honestly, the way some of those Slytherins... I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms.
grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. ये देखो ये क्विडिच का मैदान है, वो माउंटेन है जो क्विडिच के मैदान के पीछे रहता है ना वो। फिर ये अपना हॉगवर्ट्स देखो यार, वाओ। फिर ये नदी बह रही है, हाँ, इसके थ्रू वो जो क्या है वो फिनिक्स, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स वाले जो था, उसके अंदर जो बाहर से रशिया से बंदे आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं ना उनकी बोट वोट। तो ये भी क्या है, ये एक पेड़ है यार पर Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. रियलिटी में होना चाहिए था ऐसा स्कूल, सब लोग जाते हैं यार। Oh, wait, over here. Over here? इधर ही पहुंच जाना है। I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. क्या ये है? ये क्या है? ट्रम्पेट? चलो लेट्स गो। Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. अरे वो घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, जो प्रिजनर ऑफ अज़्काबान जो है ना, उसके अंदर वो लास्ट में जो बचाता है उसको, सीरियस ब्लैक को, वो वाले हिप्पोग्रिफ्स। Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that मैं नहीं डरता, मैं कभी भी आ जाऊँगा वहाँ पे और जाऊँगा। अभी टास्क इसलिए नहीं जा रहा हूँ, बाद में वरना मैं चले जाता। Past that ruin. बहुत दूर जा रहे हैं यार हम लोग तो हॉगवर्ट्स से। तू क्या घूम रहा है बे इधर? अरे घूम रहा है इधर कितना दूर? वो कौन आ रहा है? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? ये वो वाले ना जो मरे हुए बंदे मतलब उनको दिखता है, हैरी पॉटर को दिखता है और वो लूना को दिखता है Well, बस। I certainly learn a great deal in class. Much can be gleaned outside of the castle walls. हॉग्समीड भाग के जाना होता है भाई, वो डायरेक्टली ले जाते ना, वो क्या बोलते हैं यार, आग बना के लैंटर्न से या फिर कहीं से भी ऐसे जाते थे ना, वैसे जाते हम लोग। भाग भाग के भेज ये। How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you find you feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helps me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Revelio.
कहाँ लेके जा रही है यार हमको? बोर हो गया मैं भाग भाग के इधर उधर, बस ये सीनरी देख देख के भाग रहा हूँ मैं। ये देखो कितना दूर पहुँच गया मैं हॉगवर्ट्स से। Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. ये है मून। Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. क्या दिख गया इसको? She'll be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. यहाँ पे क्या है? पंजे जैसे क्या? You abandon Nazi. नहीं Nazi का abandon नहीं कर रहे हैं। जाओ जा बे Natsui. Levioso. Reparo. Lumos. Accio. Revelio. Reparo. Accio. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Reparo. I am happy to explore. Accio. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. अच्छा पहुंच गए वहाँ पे हम लोग शॉप्स के अंदर। And here we are. It is hard to know where to start. अभी ना गाइस सेव करता हूँ इसको। अभी हम वैलोरेंट खेलने जाते हैं, फिर डिस्कॉर्ड वगैरह चेक करते हैं अपने फ्रेंड्स को आए हैं तो देखते हैं ना। सेव कैसे करते हैं इसको? सेटिंग्स, एग्जिट गेम नहीं, सेव गेम, ये है ना। अच्छा ऐसे हो गया सेविंग, सेव कंप्लीट। चलो मैनुअल सेव हो गया। अभी एग्जिट करते हैं गेम को। यहाँ पे अरे कोई नहीं आया, ठीक है फिर भी हम वैलोरेंट खेलेंगे अभी। चेंजिंग द गेम, ये क्या है? ये सिटी डॉक्यूमेंट्री लड़कियों का ऑन स्ट्रीम तो देख नहीं पाएंगे हम, तो छोड़ो उसको, हम गेम खेलते हैं। हम भी खेल लेते हैं ना। कल हार गए थे एक मैच हम, -10 हो गया गोल्ड के अंदर। टीम MVP रहता हम, लेकिन टीम अगर अच्छा मिलता है ना तो गेम अच्छा होता है। इसमें टीम नहीं अच्छा मिला था उसमें वो मैच में। ये अच्छा गन है यार, वाह कलरफुल गन है एकदम, बढ़िया कलरिंग गन है। अच्छा बैटल पास है इस बार तो। स्टार्ट जाओ ना यार, कितना टाइम लगेगा गेम स्टार्ट होने में। Match found.
टीम तो अच्छा बन रहा है, देखते क्या होता है फिर। चलो यार, फ्रैक्चर मिला है। फ्रैक्चर के अंदर भी अपना रेस अच्छा ही चल रहा है। हमने तो एस हर मैप तो ये पे आ जा भाई। आई विल स्पॉन सो आई कैन स्मोक। क्या बोल रहा है? स्पॉन सो स्मोक। Spike planted. Go get him. Grenade! Enemy spotted A. One enemy remaining. Reloading. खेल लिया सबको। ये रेना अपना अच्छा तगड़ा प्लेयर है। अच्छा लगा जब तगड़ा प्लेयर मिलता है ना, तो अच्छा होता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है ना, सब कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, तो अच्छा रहता है। चलो थोड़ा ना मार्शल करके ट्राई करते हैं, मार्शल प्रैक्टिस करते हैं। A sound. Enemy spotted A. Sand. One more. One enemy remaining. Easy guys. Spike down A. Spike spotted A. Grenade!
रहना ताबड़तोड़ मार रहा है सबको। Maybe B. Caution here. Enemy spotted B. Bomb buddy out. Grenade! Caution here. Come here fast. Sands. Nice. One enemy remaining. This. Down Nice. Satchel out. Need a drop. Need a drop. Drops. Thank you. पैसा बहुत है अपने पास। लाइट शीट पे बाई रहते हैं, पैसा बचाएंगे थोड़ा। ओके, या ना बचाए, उन पर तो बाई नहीं होगा। Go get him. Grenade! Caution you. Drop, all drop. Sorry. Spike planted. Got you. My camera is destroyed. हाँ, मेरे को फाइट करने का मौका भी नहीं मिलता। One enemy remaining. Reloading. Nice. मुझको सा फाइट लेने का मौका भी नहीं मिलता है। Flawless. बंदे आ ही नहीं रहे हैं बी पे साला। एक बंदा आया था बस, उसको मारा मैंने। ये लोग क्या ही जीतेंगे, ओपोनेंट हारे नहीं वाले हैं बहुत गंदी तरीके से। सब एक किल पे है, उनका जो डुअलिस्ट है वो 0 किल पे। रैना का नाम देखो, बाउली गांड। क्या नाम रखते हैं भाई ये लोग। You should run. Bomb buddy out. Grenade! Satchel out. Satchel out. Right here. Flash out. Blinding. Spike planted. Launching smoke. One mate. Market. He TP'd. One enemy remaining. Oh, nice one. Sorry to spoil the party. Reloading. रहना क्या ही पेल रहा है उनको यार। रहना सामने आ गया मतलब वो पेल ही रहा है उनको, और कोई चांस ही नहीं छोड़ रहा। वीज खलीफा देखो एक बार भी नहीं मरा। ब्रिमस्टोन अपना।
A sound. Don't rotate. Spike down B. Stim beacon down. Guys, chill guys, इतना क्यों push कर रहे हो? अबे पीछे ब्रिमस्टोन. Enemy spotted B. Flash out. Arcade. Spike down B. One enemy remaining. तगड़ा है वो. I'm Prometheus. एकदम हेडशॉट पे रहता है उसका. अच्छा है. Yes. Greed is good. Caution here. Need equipment. Needs help. Caution here. No sound yet. Here. Yeah. One drop. Satchel out. You will not Hey. my allies. Oh shit. Bomb buddy out. Grenade. My hook's ready. Here comes the party. One drop. Last player standing. पानी मेरा गिर रहा है यार. पानी. I need this. My thanks. You should run. पीछे आ जा guys, retake के लिए खेलेंगे. पीछे आ जाओ. I think Brim is detained. Enemy spotted B. I have ult. Wait. Spike down B. Grenade. Reloading. One enemy remaining. Okay, you're done. Reloading. 4 किल हो गए अपने ये राउंड पे. उसको कोई नहीं मार, वो नहीं मारता ना तो एस था अपने. ऑपरेटर एकदम मैट फिनिश टाइप का ऑपरेटर मिला है. सरेंडर हो गया. Lol. Defenders win. भाई GG boys. GG. ये तो कॉम्पी था यार. कॉम्पी में कौन करता है ऐसा सरेंडर. ओपोनेंट बेचारे हार गए बहुत गंदे तरीके से. +32 हो गया. अच्छा खासा प्लस. ये भाई फ्लैट के बंदे थे, वो खेल नहीं पा रहे थे अपने सामने. सोल स्ट्राइफ स्पेक्टर किल इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट है. दिखाओ ना इफेक्ट कौन सा है. सोल स्ट्राइफ.
Match found. Bukit Tengul. Mijan. Player 2, player 4. Living Nightmare, vamos. Strawberry Blue. अबे क्या यार, किसका पिंग इतना गंदा है? गेम ही स्टार्ट नहीं हो रहा. बहुत टाइम लगा दे गेम में स्टार्ट होने में. There. अबे मैं अकेला यहाँ पे हूँ. I am on. एक लेन वन लेन बोथ लेन Last player standing. अरे यार थोड़ा होल्ड कर लेते, निकल जाता. बकेट टेंगुल साला एक किल नहीं हुआ उससे. होल्ड तो कर लेता ना यार.
मारना चाहिए था। I should have killed that sage actually, but छोड़ यार, कोई ना। केजे कहाँ पे था यार? वहाँ क्यों जा रहे हैं यार ये बार बार? माइक है, हेलो। माइक वाइक सब कुछ है, पर तुम लोग ये क्या गंडुगिरी कर रहे हो यार? क्यों उधर जा रहे हो? मेरे को गेको खेलना था यार। मैं ए जा रहा हूँ। ए प्लांट करूंगा, ठीक है? Got him. मैंने रे 120 other side. Last player standing. टाइम खेल। अल्लाह, इधर उधर सब जगह मर जाते हैं बंदे यार। इधर आराम से प्लांट वांट सब कुछ हो रहा है, फिर भी इनको मरना है। मैं कंट्रोल कर रहा इधर। जीरो टू हो गया बेकार में, प्लांट वांट सब हो रहा है, फिर भी ये लोग। देखो अभी इनका, अब मैं बी पे आ गया, ये लोग ए पे चले गए। Enemy removed. रुक जा। राइट में स्काई है और सेज अंदर है मार्केट में। ए जाते हैं। Here. Enemy spotted mid. Blinding. Dusted. Cover going out. Reloading. Concussing. हेवन पे बंदा है शायद, स्मोक में। Ouch! One enemy remaining. Right there. Enemy spotted A. Left. Gun here. I need a drop. Cheers. Travelers traveling. Shadows traveling. Bomb buddy out. Careful now. Grenade. Satchel out. स्पाइक अबे लेके जा, रुको। क्या? जाओ प्लांट। दरवाजा बंद नहीं करते बे। You fought well. Last player standing. फिनिक्स का ही किल नहीं हो रहा है यार। क्या बंदा मिस्टर लव कह दो उसने फिनिक्स।
कंट्रोल करने लायक बंदे नहीं है, मतलब स्मोक को आराम से अच्छे से डालो ना यार। इसका एस हो गया, वाह उनके जेट का। अपने अपने मेरा अल्ट है, मैं अल्ट पे खेलेगा, कुछ छोड़ो। सब कुछ हो गया था यार, बेकार में मरे हैं ये लोग। और ये देखो दो गड्ढे पे खेलने वाले फिनिक्स और स्काई, उनका स्काई तो स्काई खेल रहा है, देखो ये फिनिक्स लेके ये कर रहा है चूतिया पा। आयरन प्लेयर अपने नसीब में होते हैं ऐसे आयरन्स। कोई ना, हम अपना ट्राई करेंगे पूरा 6-6 या वो 5-7 जेट करके ना। मार रही थी, किसी ने उसको मारा ही नहीं, मतलब ट्रेड ही नहीं लिया। वॉक करो यार। भाई स्मोक डाल दे। रुक जा रुक जा। मत डाल मत डाल मत डाल मत डाल मत डाल, तभी जाना था। Reloading. Cover going out. ब्रिज ब्लाइंड वाइंड कुछ है, ब्लाइंड कर। Flash out. एक और एक और एक और यहाँ पे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। केजे 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 यहाँ। जाना है क्या? नहीं जाना? नहीं नहीं, मिड से जाते हैं फिर बी जाते हैं। आवाज मत करो, मैं ट्री जा रहा हूँ। होल्ड करो, तुम लोग बी जाओ मार्केट से। Spike dropped. Got spike. आराम से करो। 30 seconds left. अरे पुश मत करो, होल्ड करो। One enemy remaining. नाइस। केजे वहीं पे था ना, यहीं पे। Yeah, he's at A. Scare mid though. ट्री 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 से आएगा। He's mid AG. आराम से 148 148 148 1 HP 1 HP है वो। सेविंग सेविंग। Watch your eyes. सेज इधर लेफ्ट में ही है वो, शायद लेफ्ट। ये सामने लेफ्ट देखना। Someone's B. इन्फो निकालो केजे कहाँ पे है उनका, उस हिसाब से पुश करेंगे फिर। आराम से खेलते हैं, स्लो। Get out of my way. KJ is at A. Yeah, push me, Jets push mid. me. पुश भी। यहाँ पे ब्रिम को बुला लिया, ब्रिम और केजे यहाँ पे हैं। We planted. Come quick. Engineer killed. One enemy remaining. अरे यार, मार्केट। He has sheriff. Market on sheriff. Nice. Wait. Let me on.
जेट लेफ्ट में। आराम से चलो। You should run. Prepare for hellfire. Spike down A. You will not kill my allies. Last player standing. क्या मारा यार बीच को। यूनिक का एम क्या ही हिलता है यार। अभी मेरे को मेरा अल्ट करना पड़ेगा यार। उनका एक बंदा AFK है। कौन है अपना यार? ओमन बाय ब्रो। Thanks. प्ले स्लो। अगर केजे नहीं है ना वहां पे तो पुश कर लेना। मैं इन्फो लेता हूँ। केजे 3 जन है इधर, निकल लो। निकल लो। ए पे एक ही है, ब्री में अकेला। निकल लो। हेवन पे है ब्रिम। हेवन पे ब्रिम है अकेला। आ जाओ जल्दी। केजे को मार दिया मैंने। अरे यार हेवन आराम से। हेवन गया हेवन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा पिक क्यों लेना है। रुक ना, ते तू अननोन रहना भाई। कोई ना हो जाएगा। एंटी अभी एक बंदा मेन था ब्रो और एक साइड था। ऐसे फटफट मर रहे सबके सब यार। डिफेंस में निकल जाएगा। कॉम्स भी नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। डिंक है वो 120। Spike carriers पीछे down. से आया। Spike down mid. Last player standing. Got spike. देखो ना अभी। फिनिक्स भाई क्लच कर दे। एक को मार दे, अल्ट आ जाएगा। नाइस। 2 है वहाँ पे। मिड पे 2 है, ब्रिम और स्काई। अब मिड पिक ले। 30 seconds left. एक और है आराम से। एंड पे बी रश करते, चलो आ जाओ। बी रश कोशिश करते बाबा। फिनिक्स फैंटम ले लेते। फिनिक्स फैंटम 3-6 हो गया यार। वो अकेला बंदा मार रहा है हमको। जेट डिफेंस के अंदर बस वो जेट को मारना है हमको। जेट ही मार रहा है। Come on, let's go. Flash. Blasting. प्लांट जाओ। प्लांट के लिए जाओ सब।
आराम से होल्ड करो, एक सीटी है। One enemy remaining. Can't use this yet. Can I get a drop? Thanks. ए चले क्या ये राउंड, या फिर बी जाना है? रुक जा सेज रुक जा, हम लोग ए जाते हैं, आजा। ब्रिज ब्रिज गो बी, हम लोग स्लोली यहाँ जाते हैं, पुश करते हैं। सेज रुक जा, कुछ मत करना। हाँ 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 नाइस। केजे इधर है, केजे ए पे है, निकल गया। मिड से पुश करो, केजे अभी भी यहीं पे है। दो बंदे हैं यहाँ पे, ब्रिम और ये। बी जाओ। सेज तेरे सामने ही दो बंदे, ब्रिम और वो केजे। स्काई भी उधर ही है। बी जा स्काई, सेज निकल, सेज आजा, भाग जा, 3 बंदे यहाँ। I have the spike. I've I've got your trail. Satchel out. Spike planted. Grenade. अरे रिलोड आ गया, बैंड शो दोनों इधर है। अरे यार नहीं फ्लैश नहीं। One enemy remaining. नाइस वन यार, रिलोड आ गया यार, मेरे को पता ही नहीं। Gone here. Last round before the switch. चलो अभी अपना वैंडल का स्किन है अपने पे। Can I get a drop? दिया मेरे को किसने तो। अगर यहाँ केजे नहीं है ना तो ओमन स्मोक डाल देना, ब्लाइंड करके घुस जाएंगे अंदर। आ जाओ, नहीं है। मिड वॉल कर दिया उन्होंने। Satchel out. Satchel out. Grenade. प्लांट ओमन प्लांट। You should run. निकल जाओ। वाइंस मत जाओ, पीछे आओ सब पीछे आओ। One down. Out of charges. One enemy remaining. Grenade. Switching sides. फिनिक्स या फिर ब्रिज को एक बी पे जाना है। सेज मिड पे खेल लेगा। फिनिक्स मैं मेन खेल रहा हूँ भाई, तू ट्री देख ले। There. वाले नहीं होते हैं ये बंदे। कोई ना, हम मिड से कंट्रोल करेंगे। Wall raised.
Spike planted. क्या होल्ड कर रहे थे यार, मैं आराम से बी पे आया था। हट, घटिया होल्ड करते हैं, वॉल वॉल लगाते हैं। Last player standing. एक मिड है। फोर्स कर रहे हैं क्या? नहीं, तुम लोग जो करना है, मैं 2 राउंड स्पेक्टर लेके खेलता हूँ, ये राउंड और अगला राउंड। तुम लोग सेव करना है, सेव कर लो। बी पे है क्या? अरे बैंडी क्या मार रहे हैं यार। यहीं पर है 100 टैग, स्काई और ब्रिम। जेट अंदर, जेट अकेला अंदर है, अंदर है जेट। Last player standing. यार हरामी, वो लोग रुक के आते हैं यार, रुक के आते हैं सारे। ये 108 और 42 टैग जो क्या है, उनसे अच्छा टैग देना चाहिए था मैंने। थोड़ा होल्ड। मिड 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 पिक लेता है ये केजे, उसको मारूंगा। मरना मत। जेट आ गया अंदर। ये पीछे से आ गया केजे, पीछे पीछे पीछे। मार्केट केजे, मार्केट केजे। वन अननोन। मार्केट केजे बोल रहा हूँ यार, कॉल सुनो ना। हेलो भाई, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? नहीं आ रहा। हेलो, आ रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है भाई, कर लो। नहीं आ रहा बोल दिया उसने, अच्छा काम किया। 6-9 हो गया यार, अभी कम बैक करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। पुश मत कर यार, होल्ड करते हैं। कहाँ है ये लोग? ए पे नहीं है भाई, फिनिक्स रुक जा। अच्छा है, ए पे है एक। ए पे है। स्टन दोनों ए पे है, दोनों ए पे। You will not kill my allies. रुक जा, फिनिक्स आ रहा है। होल्ड होल्ड, फ्रीज होल्ड। अरे यार पीछे जा रहे हैं यार। फिनिक्स ने अगर वो जेट को मार दिया होता ना, होल्ड पे वो अटैक करने गया। Last player standing. बाप रे रोमन ने क्या ही किया है यार। MR गारो बॉयज ब्रो, हाउ आर यू ब्रदर? क्या चल रहा है? हम यार यहाँ पे हार रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यार मिड। गन भी नहीं मिल रहा ऊपर से। अपन क्या करेंगे ना, अपन सेव करेंगे।
Spike down A. You should run. Come on, let's go! Spike planted. One enemy remaining. स्पाइक पे Last player स्पाइक पे standing. स्पाइक पे इधर Nice. भाई किसी तरह जीत गए यार। केजे को टपली दे दी मैं। क्या आ रहा था आराम से, उसको लगा कोई नहीं है, मतलब मैं था उधर यार, मैं था, अपन था उधर। रहने दो, वैंडल पे ही लगाते हैं अपना, ये प्रॉपरली वैंडल ही उड़ाते हैं भाई। ए मेन पे एक आ जाओ यार। आ रहा हूँ। मिड स्मोक दिया, हाई मिड इधर हो सकते हैं, मिड से आएंगे। नाइस शॉट, होल्ड करो। अरे आ गया, स्मोक पुश किया। मिड कभी कभी इन ट्रीन केजे ट्री है ना, साइट हो सकती है। स्काई होल्ड कर, ब्रिज होल्ड कर, स्काई ब्रिज का अल्ट है। एक और 30 seconds left. Last player standing. वॉक कर भाई, वॉक कर उमन। Spike planted. मेन एक बोल भी नहीं सकते यार, बहुत लो लेवल का बंदा है। आई थिंक सो 7-11 हो गया अपना, हारने वाले हैं हम लोग गंदी तरीके से एकदम। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे रुकता हूँ, आने दे इनको, हम लोग अभी अल्ट मारेंगे इनके ऊपर। Watching here. फिनिक्स भाई पीछे हट जाए यार, मेरे को अल्ट करना है यहाँ पे। ये बंदा यहाँ पे ब्लाइंड माइंड करेगा बकवास, इसको और कुछ आता नहीं है क्या? गया ये, मरने वाला है। 110 केजे लो। अपना राउंड यार, हारो मत। One enemy remaining. लास्ट वन बुलेट, लाइक 1 HP। 110 थे, पीछे आ सकते हैं मिड टॉप। बोला Can someone get this? Can someone get this? उड़न दे उड़न करूंगा बैंड। ठीक है भाई।
should run. Heal, heal. Sage, heal. Healing you. बाहर रहो, बाहर रहो. Satchel out. आराम से रहो, आराम से रहो. 80 टैग है केजे. Spike down A. पुश करो, ब्लाइंड है वो लोग. One enemy remaining. ओडिन उठाओ, ऑपरेटर उठाओ. हम भी ओडिन करें क्या? जीतने के लिए तो ओडिन करना पड़ेगा भाई. इसके साथ तुम्हारा ये कर ले तू. अरे बाय ब्रिज बाय वुमन. अबे नहीं, 70 टैग है. मिड पुश हो रहा है. I've got your trail. नाइस ब्रदर. सेज मिड पे है ना, मैं मरा हूँ. ट्री पे आके रिवाइव कर सकता है. सेज रेव करने आजा मेरे को. छोड़ स्पैम मत कर. रेव कर. प्लांट हो गया भाई. अब रेव मत कर यार, टाइम. आराम से लो. टाइम है. होल्ड करो. Last player standing. One अरे enemy remaining. रुकना भाई. Match point. ओडिन इसीलिए लिया था केओस मचने के लिए यार. सेज मर गया, पता है क्या? केजे अकेला था. हम भी ओडिन लेते हैं अभी. और कुछ बचा है नहीं ऑप्शन अपने पास. लेट्स गो ओडिन. ब्रिज मेन देखना ब्रो. मेरे को लग रहा है ब्रिज पे. ए पे बंदा है एक. और बुटा रहा है. होल्ड करो. Go get him. बस ज्यादा नहीं. बस. भाग गए. One enemy remaining. Spike down mid. ऐसे रुक. अबे फिनिक्स साले एस बोलता है, अभी लेने नहीं दे रहा है. देख इसको बता के रख तेरे दोस्त को. देख एस चोरा है मेरा. हाँ साले. मैं नहीं मार दूं उससे पहले तेरी. Get out of my way. होल्ड करो भाई. कहाँ पे है बंदे?
अबे सेज मिड ट्री चढ़ के आ गया भाई वो। गया राउंड। Careful now. ये जाओ ये जाओ। 80 लो, एक का गेम है। राउंड गया है यार। 30 seconds गया left. मैं एक इधर ही है, एक विंडो विंडो विंडो, एक विंडो एक विंडो एक विंडो। मेन देखने लग गया, मेरी गलती। Shadows traveling. अंडर है अंडर है। Kill the sky. अंडर डेड। Reloading. Last player standing. ये जो हो गया वो। Attackers win. One enemy remaining. हार गए। चलो गैस अब मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ, बाद में खेलेंगे। फिनिक्स -10 हो गया। कोई ना, ये देखो साले सब प्लेट के यार, ये प्लेट के बंदे थे। हेलो वुमन अपना प्लेट का, सीरियसली कुछ भी यार।